Moving on to the next question, guys, that is question number 21. Let's read this one too. Okay, so एक कहा गया है मुझे, there is a triangle, okay, और कुछ इस तरह से chord है और उसको हमारे रेडियस सेंटर से एक लाइन है. तो पहले बना लेते हैं फिगर, फिर बातें करते हैं हम. Okay, so you have a circle, we have a chord, right? Where is my chord? This is my chord. This is M, this is N. Okay, this is my chord, this is my center, और कुछ इस तरह से straight line है center से. This center is O, this line is L. Okay, OL. Fine, let's read the question ahead. So MN is the chord of a circle with center O. MN is 25. Okay, so MN दिया है मुझे कितना? 25. Okay, आगे पढ़ते हैं. L is the point on the chord MN such that ML is 9. So ML is 9. Okay, मुझे और भी कुछ कहा गया है. मुझे कहा गया distance OL is 5. So this OL is 5. Okay, so this is 9, this is 5. Fair enough. और कुछ पता है क्या मुझे? देखते हैं क्या है आगे. And further we need to find the radius of the circle. Okay, तो टास्क है मेरे सामने. I need to find the radius of the circle. So guys, radius कौन सा होगा? Radius आप बोलोगे सर ये वाला होगा, right? This will be the radius of the circle. At the same time ये भी radius of the circle ही है. Okay, fine. कुछ और मुझे इनके बारे में पता है क्या? MN is the chord नहीं, और कुछ नहीं पता. I need to find out the radius of this particular circle. Okay, so दोस्तों we can get ln. ln कोई बहुत बड़ी बात नहीं निकालना. We can just say mn is nothing but ml plus ln. So this is 25 will be equal to I can just say that it is कुछ परपेंडिकुलर दिखता है क्या यहाँ पर? If you see ध्यान से देखो तो शायद कुछ हो सकता है परपेंडिकुलर भी निकल जाए. ओके, फिर परपेंडिकुलर के बिना मेरा शायद काम आगे बढ़ने वाला नहीं है. ओके, सो ml is 9, ln we don't know, so 925 minus 9, this will be equal to ln. This is 16, so therefore ln becomes 16, right? So मुझे ये भी पता चल गया ये 16. Okay, now look at this carefully. So guys, solving this problem would be very difficult without a construction. एक दिमाग में मेरी घंटी बजी, एक क्लिक आया, एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं. Let's draw a perpendicular from the center to the chord. Okay, so draw, I can say perpendicular. The construction is short form में लिखता हूँ. Draw perpendicular from center to the chord. तो फिलहाल के लिए मैं इस phi नंबर को यहां से निकाल लेता हूं. तो आप लोगों को पता है perpendicular from center to the chord will bisect the chord, right? So you know perpendicular from center to chord bisects the chord, right? Bisects it. So अगर मैं परपेंडिकुलर यहां पर ऐसा बनाऊं, तो डार्क से ही बनाता हूं, ठीक है? मैंने वो क्लोज भी किया कंस्ट्रक्शन से, डार्क भी किया, तो ये परपेंडिकुलर होगा. लेट्स कॉल दिस एज पॉइंट ए. ओके, पॉइंट ए कहते थे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना. ऊपर वाला पॉइंट एल है, नीचे वाला पॉइंट ए है. तो परपेंडिकुलर तो मतलब दोनों साइड परपेंडिकुलर होगा दोस्तों. ये भी परपेंडिकुलर होगा. ओके, ये भी परपेंडिकुलर होगा. ओके, एंड वो बाइसेक्ट करेगा मेरे कॉर्ड को. तो एम ए will be equal to an. यहाँ देखो MA will be equal to AN. This will be half of MN, right? बराबर half of MN. MN 25 है, so MA will be equal to AN. Both will be half of 25. Half of 25, that is MA will be equal to AN. This will be equal to 12.5. Okay? तो मुझे MA पता चल गया 12.5. मुझे पता चल गया AN 12.5. Now listen carefully, guys. Look in this particular MA. So MA can be written as ML plus LA, right? मैं टेक्निक से लिख रहा हूँ. MA is 12.5, ML is 9, so therefore LA यहाँ पर 2.5, यहाँ पर -9 हो करके LA मुझे मिलेगा 3.5. So LA is 3.5. Now look into this triangle. You know this much is 2.5. This is OL is 5,
Can I get OA? Yes, I can get OA by Pythagoras theorem, right? So I can say in right angled triangle OAL. OAL. So therefore OL square 90 के सामने हो तो OL ही है. OL square will be OA square plus LA square, right? OL is 5, so 5 square will be OA नहीं पता, कोई बात नहीं पता तो OA square plus LA मुझे अभी भी पता चला है 3.5, right? So I'll keep it out here 3.5 square. ठीक है. Now this is 25, this will be OA square plus 3.5 का स्क्वायर. ओके 3.5 का स्क्वायर कितना होता है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो अराउंड, चलो कर ही लेते हैं, क्यों रिस्क लेना. तो 3.5 इंटू 3.5 5. ओके दिस इज 2, दिस इज 17, दिस इज 5, दिस इज 105. So this is 5 to 2, okay, this is 12.25. okay, so 12.25, okay, fine. तो इसको यहाँ ले लो, तो this will be 25 minus 12.25, this will become OA square. okay, so this is how much? This is 12.75 दोस्तों, OA square. So therefore OA square is 12.75. I'll keep it 12.75 only now. ओके मैं इसका रूट नहीं निकालता, ऐसे ऐसे ही छोड़ देता हूं. इसका एक रीजन है. अब हम क्या करने जाएंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों, अब हम नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखो, हमारे राइट एंगल ट्राइंगल OAN पे क्या करेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. सो आई कैन से इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल OAN. सो ON स्क्वायर 90 के सामने तो ON ही है ना, तो ON स्क्वायर विल बी OA square plus AN square, right? तो ON is nothing but it is the radius, so I may just write down radius square. OA अभी मिला, OA square मिला मुझे 12.75, तो I'll put out here 12.75 plus AN मुझे पता है, MA was AN, right? That is 12.5, पर उसका स्क्वायर है, तो ध्यान से देखो 12.5 का स्क्वायर. So therefore radius square will be 12.75 प्लस 12.5 का स्क्वायर साइड में निकालते हैं. 12.5 इंटू 12.5, 5 5 are 2 carried over, 1 carried over, and you will have 625. then ये हो जाएगा 250, then ये हो जाएगा 0 0 125, right? 5265, right? 150, okay, it will be 156.25. इसको ऐड करो तो 75 प्लस 1 यानी 1, ये हो रहा है 169 दोस्तों, बराबर 169. अच्छा 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है ना 169, बराबर 13 3 तो देयरफॉर r विल बी रूट ऑफ 169, सो r विल बी 13, राइट. सो काफी मेहनत के बाद यहाँ पर रेडियस मिला है, राइट? रेडियस मिल गया मुझे 13. ओके, सो दिस इज द सोल्यूशन टू योर क्वेश्चन नंबर 21. यहाँ ट्रिक थी छोटी सी. क्या ट्रिक थी? कि परपेंडिकुलर बनाना था. ओके, एक बार परपेंडिकुलर बना दिया तो काम ऐसे हो जाता है. ओके, सो मेक अ नोट ऑफ क्वेश्चन नंबर 21. Now this is the 22nd sum from the problem set 3. See what they have given. The two circles are intersecting at points S and R. Okay. Then PQ is a common tangent. What do you mean by common tangent? So PQ is tangent for the smaller circle also and for the bigger circle also. And then these are the 2 points of intersection. That means S lies on both the circles. Now what we want to prove is PRQ plus PSQ is equal to 180. First observe the figure. Where is PRQ? So PRQ is this angle. See PRQ. And where is PSQ? Then PSQ is here. So we want to prove that these two, sum of these two angles is 180 degree. Okay, so for this I want to do a small construction. Actually it is not a construction, but I will join only this SR. See why I have joined this SR? Because I can use now our tangent secant theorem 2 times. That is, suppose PQ is a tangent at P, only now observe a smaller circle and not a bigger circle. Remove it from your mind.
So this is a smaller circle and PQ is a tangent, PR is a secant. Okay, so the angle between this tangent and secant of course is equal to angle between the opposite arc. That is, here it is PSR. You can say like that also. Angle between the secant and the tangent is half of the measure of the arc, and this also is half of its measure, so both are same. Okay, similarly, suppose I go from the second circle, that is again at Q. For the bigger circle, PQ is a tangent and RQ is a secant. So angle between this secant and the tangent of course is equal to angle between the opposite segment, and so this is PRPQ. Now our problem is over. How? See this, this is also a triangle and the two angles are congruent. Okay, so I will write it. First one, proof. See, first I will write for the bigger or smaller triangle. In a smaller, not a triangle but a circle. In a smaller circle, that is PQ is tangent. PQ is tangent. So what we want? The first statement I will write it as angle RPQ is equal to angle PSR. See, RPQ is equal to PSR. And why is it so? This is the tangent secant theorem. Tangent secant theorem. Okay, we are using this tangent secant theorem. Similarly for the bigger circle also. So I will write here, similarly angle RQP will be equal to angle QSR. QSR. The same reason is there, that is tangent secant theorem. Can you add these two? Okay, so by adding this, what you will get? That angle PRQ. Now instead of that, first what I will do, because I want to prove PRQ. Is there any PRQ? No, there is no PSQ also. So what I will go here, in triangle RPQ, only concentrate on this smaller triangle. So there are three angles, one is black, one is green and one is red. So three angles. What is the sum of the three angles of a triangle? It is 180. So I will write here angle Q or PQR. So sorry, it is not PQR but it is angle PRQ plus angle RPQ plus angle RQP, which is equal to 180 degrees. Why? Angles of triangle, that is sum of the angles of the triangle is 180. Now I know that this RPQ, here is RPQ, which is equal to PSR. Can I write here? Plus angle PRQ plus, instead of this RPQ, I will write PSR. See, from here I will get for this PSR. And then what is there? This RQP. See here. So I can jump to this angle. And then I will write it as angle QSR is equal to 180. Okay. From 1 and 2. From 1 and 2. But now here, if these two angles are added, see, PSR and QSR,
then this is the whole angle which is PSQ, and therefore angle PRQ plus angle PSQ is equal to 180. And here I can write from figure. So what is from figure? That is the addition of these two angles is equal to PSQ. So this is just a simple statement, that is tangent secant theorem. Find out two angles, add them together by finding out the inner triangle and substitute them. Then you will get hence proved. The last statement we want to write is hence proved. Let's go on to the next problem, guys. That will be question number 23. दो circles है. Let's read and understand this particular questions, okay? So दो circle है, तो हम दो circle बनाएंगे, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला. तो एक छोटा circle ऐसा, okay, and दूसरा एक थोड़ा बड़ा circle बनाते हैं, बड़ा वाला ऐसा, okay? तो दो सर्कल है, हमने दोनों बना दिए. नाउ आप देख सकते हो कि कुछ सीकेंड्स बनाने, ओके, एम पॉइंट से पास करते हुए, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हुए दो सीकेंड्स बनाने. तो एक ये वाला सीकेंड ऐसा कुछ बन रहा है, राइट. आई विल जस्ट एक्सटेंड इट अ लिटिल बिट फॉरवर्ड, यहाँ से भी थोड़ा सा फॉरवर्ड. फिर ये पॉइंट इस तरह से है, इसको भी हम बराबर से एक्सटेंड करते हैं, ठीक है. अब निकालना क्या, इनको थोड़ा नेमिंग कर दो ना जरा. सो दिस विल बी पॉइंट आर एम एस. सो दिस इज आर, दिस इज एम, दिस इज एस, ओके. उसके अलावा यू हैव पी एन क्यू हियर, पी एन क्यू, ओके. नाउ व्हाट वील डू इज we'll read the question. So two circles intersect at point M and N. Secants drawn through point M and N intersect the circle at R, S, P and Q respectively. ठीक है, सब समझ में आ गया. अच्छा, इनको भी ज्वाइन करना है, सो ज्वाइन कर लो. इनको भी ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लो, ओके. क्या प्रूफ करना है वो देखो. वी नीड टू प्रूव SQ is parallel to RP. तो मुझे प्रूफ करना है SQ is parallel to RP. ये दोनों पैरेलल प्रूफ करने हैं, ठीक है. फिलहाल दिख नहीं रहे पैरेलल, पर है. तो मुझे प्रूफ करना है टू प्रूव SQ is parallel to RP. वेरी सिंपल गाइस. इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा पता है? एक काम करो, MN को ज्वाइन कर लो. तो आई कैन से कंस्ट्रक्शन इज ज्वाइन MN, ज्वाइन MN, ठीक है. सो MN को ज्वाइन करते हैं, ओके. MN को ज्वाइन करते हैं. सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट. कैन आई से RMNP, this is a cyclic quadrilateral, right? देख के पता चल रहा है because all of the points are on the same circle, right? So proof start करने से पहले मैं लिखता हूँ quadrilateral RMNP is a cyclic quadrilateral. देख के visualization से, ठीक है. तो ये हो गया cyclic quadrilateral. So therefore can I say angle MRP plus PNM, angle MRP plus angle PNM, this will be equal to 180 डिग्री, बराबर. ये एंगल और ये एंगल दोनों 180 डिग्री होंगे, उनका एडिशन. Why? Because opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary, right? तो आप लिख सकते हो opposite angles of cyclic quadrilateral, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं अभी, आर सप्लीमेंट्री, ठीक है. इसको 1 कह के थोड़ा छोड़ दो, ओके, फाइन. सिमिलरली दोस्तों इस साइड पे ये एंगल और ये एंगल दोनों भी वो साइड पे MSQN इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. MSQN इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. Okay, fine. So this is a cyclic quadrilateral. So therefore, angle MSQ plus angle MNQ, इसको भी ऐड करने से 180 मिलता है. The reason is again, इसको 2 कह करके मैं लिख सकता हूँ. Opposite angles are supplementary. Opposite angles of
cyclic quadrilateral are supplementary. Okay, fine. So therefore दोस्तों, can I just write down now कि okay, ये इस तरह से बराबर हमने यहाँ पर लिख दिया. ओके, अब ध्यान से देखो जरा, हम एक काम करते हैं, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, राइट, बराबर, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए. ओके, सो हम उनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल लिख सकते हैं. बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड व्हाट वील डू इज मैं इसको यहाँ पुट अप कर देता हूँ. तो यहाँ पर सिर्फ m, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मुझे पता है, इन दोनों को ऐड करने पर भी 180 आना चाहिए, राइट, बराबर, यू नो दैट, इन दोनों को ऐड करने पर भी 180 आना चाहिए. तो एक काम करते हैं ना, let's start like this. Let's add 1 and 2. So add 1 and 2. So I'll put MRP as 1 plus उसके साथ मैं ऐड करता हूँ MSQ को, and I'll add this two together, PNM plus angle MNQ. राइट, इनको दोनों को, और राइट हैंड साइड पे ऐड करोगे तो दोनों हो जाएंगे 360, राइट, 180 प्लस 180 इज 360. बट वी नो PNM एंड MNQ, इनको सम करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए. व्हाई? बिकॉज दे आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, राइट, एक ही लाइन के दो एंगल है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए. सो देयरफॉर आई हैव MRP प्लस MSQ विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, राइट. मैं लिख दूंगा दे आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, राइट, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर. नाउ 180 को उस तरफ शिफ्ट करो तो माइनस 180 हो जाएगा. सो देयरफॉर यहां लिखता हूं MRP प्लस एंगल MSQ, दिस विल बी 360 minus 180. तो 360 minus 180 is again 180. So MRP plus MSQ, MRP plus MSQ हो जाएगा 180. So therefore I proved that MRP और MSQ ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, राइट, बराबर. दोस्तों सिमिलरली मैं प्रूफ कर सकता हूं दैट ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री है. क्या प्रूफ कर सकता हूं? बेसिकली MRP और MPQ क्या है? एंगल R प्लस एंगल S 180 डिग्री प्रूफ कर दिया मैंने. सो सिमिलरली मैं प्रूफ कर सकता हूं एंगल P और एंगल Q भी आर आल्सो सप्लीमेंट्री. सो देयरफॉर इफ adjacent angles are supplementary then this is a parallelogram, right, हम प्रूफ कर देंगे. So therefore quadrilateral RSQP is a parallelogram. Why? Because हमने प्रूफ कर दिया. कैसा प्रूफ किया parallelogram? Opposite sides, or sorry, if adjacent angles are supplementary, adjacent angles are supplementary, right? So यहाँ से adjacent angle supplementary, तो parallelogram, and you know parallelogram की opposite sides parallel होती है, right? तो simple, RP will be parallel to SQ, right? So या तो SQ is parallel to RP. What is the reason? Opposite sides of a parallelogram are parallel. Okay, so with this guys हमने opposite side जो parallelogram पहले प्रूफ कर लिया, उससे parallel प्रूफ कर दिया, right? So with this we complete question number 23. Now in this sum of 24, you can see it is similar to 22nd only. What is the difference? There was a common tangent and a secant is common. Here there are two tangents and a common secant only. See, you can join the three things. That is, one, I am going to join AE. Why? Because I want this as a tangent secant theorem. This may pass or may not pass through the center, don't bother. But here you can have one tangent and one secant, BE is a secant, and then of course their angles will be same. You see, it's but the same. So this angle
will be equal to this angle. Okay, angle secant angle theorem. Similarly, if I join AD also, then again what will happen? See, I joined AD, then here also this is a tangent and ED is a secant, and so angle between these two is same as the angle between the opposite one. Now here you will come to know that which point we are taking. The quadrilateral ABCD is a cyclic, we want to prove. Which properties you know about the cyclic quadrilateral? There are two properties. One is opposite angles are supplementary. That is, their sum is 180. Then the quadrilateral is a cyclic quadrilateral. Or exterior angle is equal to the remote interior angle. Then also the quadrilateral is a cyclic. Here we use the first test, that we will try to do the C angle and A angle if they are 180, or D and B also we can take, but we can easily find out angles here. Then we can say that it is a cyclic quadrilateral. So how I will write here? First, for that I will write the construction, because otherwise you will not remember to join this. Okay, so join AB, then AE, and then AD. All these lines we have to join, and then I will write the proof. Similarly, the same points, I will write first these two angles are equal, then these two angles are equal, and then these three, of course, are the angles of a triangle, so it is 180. Okay, so just it is a simple one. So I will write here like of BC is a tangent, and therefore angle EBC is equal to angle EAB. And what is the reason for it? That is the tangent secant theorem. Tangent secant theorem. Okay. Now the second one. Here this is my first, and similarly for the second, DC is a tangent. As BC is a tangent, then DC is a tangent. Then what I will write? Again, angle EDC is equal to angle DAE. Okay, so the same reason. See, we are writing on the same parallel lines, and then here we come to the triangle. So in triangle BCD, what we want is one angle DBC D. So in this BCD triangle, one DBC plus BDC and then plus BCD. Okay, so it is equal to 180 degrees. Here is the reason is triangle, angles in a triangle. So I will write angles in a triangle. Okay, so now here again I will mention you that DBC is my green angle. Okay, so green is like A also. Similarly, I can write here again that BDC is my red angle, which is this also. So I will substitute these angles and will get DBC, instead of DBC I will write BAE. So angle BAE plus, so this is, and then the red angle BDC is same as AED, angle EAD plus angle BCD is equal to 0. Sorry, it is 180. Now from figure you can find out the sum of these two, BAE
and EAD is the whole angle. Okay, so here it is angle BAD. Angle BAD plus angle BCD is equal to 180. We have substituted here from 1 and 2. Okay, this is my first and the second statement. Now our statement is over. This is BAD full angle opposite to BCD. See here, the opposite angles are supplementary, and so it is a cyclic quadrilateral. Okay, so I will write my last statement here. Therefore, quadrilateral ABCD is cyclic. Why? I will write the reason also, that opposite angles are supplementary. Okay, so we have used this test that the opposite angles are supplementary. To show that, we have learned how to write the statements, and then we can find out that quadrilateral is a cyclic